Hello, good morning students. Now in 9.1 we start from fourth sum. As you know, in previous lecture we solved first three sums and discussed very basic concepts of this lesson. This is the application of trigonometry, means you have to solve some problems. If right angle triangle is from anywhere, then you can find either altitude or base or hypotenuse using either sin theta or cos theta or tan theta. Okay, and they are very primary level sum right now. And another things, in this year only first five sums from exercise 9.1 are in syllabus. Only first five sums from exercise and first three examples. So total 8 sums we have to solve here. Okay. So now, right now, we just discussing and solving those sums which are in syllabus. Later on, whenever we meet here, in school reopens, we will see remaining sums also. Okay. Now, again I repeating whatever I told you in previous lecture. First of all, understand the question well, then draw figure accordingly given data. After drawing figure, describe that figure by supposing, then just list out all measures and required measures also whatever asked. Then apply any one or two trigonometric ratio in calculation. Okay, so there are 4 steps: figure, description, measurements and calculation. Okay, so now just look at, and one another concept also we discuss, angle of elevation. Angle of elevation is nothing but if observer is here and suppose observer is looking somewhere here, point P. Okay, suppose this is building, tower, whatever maybe, tree, temple, and person is here. Person is here means person is point wise. Okay, otherwise person's eyes are here. Okay, so now from that point only we just considering height. Now if that person looking at the top of that suppose tower this, then this is the line of sight. Line of sight is a totally imaginary thing. Okay, if I see that, then this is my line of sight and this is my horizontal ray or horizontal line. Okay, so in between this is horizontal line and I am seeing that, so this is the angle. You can see angle of elevation. Why? Because object is above then horizontal line. Suppose object is below, then what happens? Horizontal line means same only, but I have to see there only. Okay, so this way it will be angle of depression. So angle of elevation and angle of depression collectively are angles between line of sight and horizontal line from observer. Elevation and depression would suggest that elevation means above, person seeing above. Depression means person seeing downward. Suppose person itself is here and seeing anywhere, stone, vehicle, whatever, then arrow will be there. Okay. So now this is the angle of elevation. Angle of elevation. Okay. Suppose instead of that person standing here and he or she looking here only, then obviously horizontal line will be here. So this is angle of depression. Matter is same, but just quite opposite of that. And I also explained that angle of depression is out of triangle. This is not interior angle of triangle. Means not angle of triangle. So we have to take here its alternate angle. So in place of angle of elevation, angle of depression comes. But basically it is not angle of depression, alternate angle of that. Okay. So now these are the basic concepts related to this lesson. Now look at number 4. Angle of elevation of the top of tower from a point on the ground. So now just look here. So again every time right angle triangle will be there. How to first of all draw vertical line, maybe tower, building, whatever. Okay.
So here angle of elevation of the top of tower. So let AB tower. AB tower. You can write here also, otherwise you are going to write in the description there. It's not compulsory, but if you write, you will be more clear. Means matter is clarified well. Now that is being observed from a point on the ground. So this is the ground. Horizontal line is ground. Anywhere it is observed. What is observed here? Top of tower is observed. From where? Point C. So C is either observer or C is point of observation. Anyway, you can say C as an observer also or C as a point of observation also. Okay. So this is the angle of elevation. Line of sight, horizontal line. In between angle is angle of elevation. Okay, and that is given 30 degrees. One measurement should also be given 30 meter away. So that person is 30 meter away from the base of tower. From base of tower, not from top of tower. Okay, and distance is always measured perpendicularly. Okay, so from base of tower, from tower. From tower means base of tower. So now if one angle and one side is given in any right angle triangle, then we can find remaining all angles and remaining sides also using trigonometry. Okay. So now any angle means we are talking about 30, 60, 45. Any angle is not 19, not 26 right now. Okay, in 10. So what is us? That also be clarified. So now figure is almost complete, level. Okay. So this is the figure. Now write down supposition. So suppose first of all vertical thing to be denoted. So AB tower. Here top of tower. Okay, you should clarify after AB tower which is the top point. Because it may be B and A also. There also we can say B tower. How? So if any point, top point is clarified, then automatically B is bottom. No need to write that. Okay, it is automatically clear. C is either observer, otherwise point of observation. Point of observation. Okay. So now it is over. Description over. Now second step. Or third step after figure, first, second, third. What is given? BC equal to 30 degree. Angle ACB 30 degree. What is asked? AB question mark. Everything came here. Given and required all measurements. Now calculation. Either sin or cos or tan. You can see here. Opposite side required, adjacent side is given. So I have to take 10. And whenever angle of elevation and depression words are used, obviously something is being observed. So if something being observed at that time, this is not any physical thing. It is imaginary. So always we have to take 10. Why? What is this? Nothing. So how they can ask? Okay. So obviously 10 is here. Otherwise you can see here also opposite required adjacent given. So obviously 10. Okay, you can take pot also, but as I told yesterday, we just take from first 3 ratios, not inverse of that. So now, in triangle ABC, every time write triangle's name also. 10, 30 equal to AB upon BC. Now, 10, 30 is value 1 by root that you know. AB is not given. BC 30. Cross multiply. So root 3 AB equal to 30. Okay. Now AB. First of all, root 3 will go and denominator. So I should know here. I must remove this denominator either by rationalization or by cutting. So I am just trying for cutting. So I am not writing 30 but 10 multiply 3. Why? Because we know denominator should not be irrational. So for removing that, I
I written here factor 3. So AB equal to 10 root 3. And apply unit also at right step and write down statement also. Therefore, height of tower is 10 root 3 meter. Okay. So now we will write here statement also. I am not writing. Okay. So again, it is very simple, but angle of elevation will come first time. So you just understand what is the matter. Okay. Now take screenshot. Otherwise, just pause your video and write it down. Now look at number 5 and try to understand it. Kite is flying at a height of 60 meter above the ground. मतलब kite की height है वो 60 meter ground के ऊपर. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. So that is tied to a ground. Okay. So automatically it is steady over there. The inclination of the string with the ground is 60. Inclination is here what we would understand. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. Obviously, string slack तो होना ही नहीं चाहिए, वरना ऐसे रहेगी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो फोर ही बनेगा, जो हम अभी सॉल्व कर सकते नहीं. ओके. तो देखो मैंने पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया. मुझे पता है कि वो आने वाला है, तो ये काइट है, इस काइट. Actually, AB is nothing here. AB is nothing. Why? That is just we showing height of kite from the ground. Okay. And AC will be straight. Okay. No observer, no one seeing anything. Just real thing is that. This is the string you can write. Is kite I have done. Okay. So now not slack means it is not like this. And if it is slack, then we cannot find it. Okay. Now they are telling inclination. The inclination of the string with the ground. With the ground is here. With vertical is here. So with the ground given so here. If it may be given with the vertical, then I might have written here. Okay. So be careful. With the ground. Inclination is what you understand. Okay. Now again what is given? Height 60 meter above. 60 meter, 60 degree both are different. What is asked? Length of string. Okay, obviously here hypotenuse is something, some physical thing. So either we have to take sine or cos. Okay, so now you can see opposite side given, hypotenuse required, so we have to take sin 60, sin theta. Okay. Now before discussing is just describe this figure. Suppose A is kite, AC is string, AP is nothing but height of kite. AB height of kite. This it is one type of measurement of anything. Height of kite. Okay, it is enough. Now write down measurements. First of all, AB equal to 60 meter. Then angle ACB 60 degree and AC equal to 20. So third step also after figure description measurements. Now write down triangle and apply trigonometry. So in triangle it is actually why I am writing every time triangle step, because actually that sums are cancelled, but in further sums
There are so many triangles in the figure. This is only primary level sense. So we have to write actually triangles lengths. Okay. Now, since 60 I have kept by opposite side given and hypotenuse is required. Okay. So I am writing here since 60 AB upon AC. It is root 3 by 2. AB 60, AC not given. Cross multiply. Root 3 AC 120. 62. Now I know root 3 will go in denominator. For cutting purpose, cancellation purpose, I have to factorize this one so that 3 is of one factor, not prime factorization. So I am writing this 14 into 3 only because I want 3 only, not all factors. Okay, so that I can cancel out. So AC equal to 40 root 3 meter. Now statement, therefore the length of string is 40 root 3 meter. Okay, so all questions are almost the same. Just try to understand by writing twice thrice and draw properly figure because we have to convert that data. Okay, transpose that data into figure. Okay, so that data is transferred into figure. Symbolic, that is me. If figure is okay, almost everything is okay. Except you make any mistake here, then it is the other thing. Otherwise, figure is right, it is half sum done. Okay. Now look at number 1, example number 1. Now remaining sums are cancelled out, so we are not trying right now. Example 1 is very simple. Just look there. Okay, didn't take screenshot, otherwise post video and write it down properly. And you have to write this only. Many students start from here only, from main part. Nothing description, not systematic writing is taught. You know this is the 3 marks or 4 marks of questions. So if you write just like 1 mark, it is not enough. Okay, so be careful. Everything must be perfect and describe minimum. I always write minimum. Okay, मेरा जो भाव होता है तो रिजनेबल ही होता है, प्राइस रिजनेबल होता है. वो रिजनेबल का ही रिजनेबल आप करोगे तो क्या होता है, लॉस का बिजनेस हो जाएगा. ओके, तो एकदम रिजनेबल प्राइस से अगर आपको परचेज करनी है तो इससे कम में आप लॉस में जाओगे, कम मिलेगा मार्क्स. ओके, तो ज्यादा लॉस मत करना भाई, यहाँ पर शॉर्ट करना है तो मैंने कर दिया, आपको करना नहीं है. Example 1. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. Okay, tower stand vertically. देखो कोई भी चीज वर्टिकली होती है तो ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है. फिर भी वो लोग क्लियर करें तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये कहां से आ गया वर्टिकल वाला. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot. हम एक पॉइंट की अभी बात कर रहे हैं जो इसका बॉटम बेस है वहां से 15 मीटर अवे है, मतलब बेस 15 होगा. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. The angle of elevation here is 60, base is 15, height means altitude is asked. Okay, so again same figure, every time same figure, same name. ABC, AB tower. This is observation point, angle of elevation. This is the distance. Now, distance. Sorry, first of all, 60 degree angle of elevation. Distance 50 degree. This is this. Okay. So very fast, AB tower. Suppose
देन ये टॉप होता है। Whenever tower bending like this, top point also be specified. Okay, C is point of observation or observer. Point of observation or observer. Okay, now it is over measurement. Angle ACB 60 degree. BC 15 meter. AB not meter. Now calculation. In triangle ABC, what I have to tell? As I told you, whenever angle of elevation depression what is there, hypotenuse is nothing imaginary. So obviously, okay. And otherwise you can see here also opposite side not given, adjacent side given. So take 1060 equal to AB upon BC. So root 3 equal to AB upon 50. Obviously 50 root 3 equal to 50. Now set it and write systematically. So AB equal to 50 root 3 meter. Now write down statement. अब ऐसे मत करना हो, मेरी तरफ स्टैक मत बना देना। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल किया था लास्ट ईयर, शायद हमारे क्लास में किया था। 2-3 ऐसे निकले थे कि मैं ऐसा करते थे तो वो बिल्कुल ऐसे ही करते हो, देख के ऐसा करते थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके। और इतना भी इसको पता नहीं है कि वो ऐसे करे या वैसे करे, बात तो ये है ही नहीं। तो बिल्कुल 3 लोग ऐसे निकले थे पूरे क्लास में से। मैंने बोला कि भाई स्टेटमेंट आप खुद लिख लो। मैंने ऐसा स्नैप बना दिया इसके कि ऐसा है बिल्कुल, इसकी जेरोस्कोपी बना दी। ओके, तो थोड़ा बहुत माइंड है तो सही, इसका यूज भी करो। मैं क्या बोलता हूँ सुनो, इसमें मैथ्स तो पेपर आया नहीं, जस्ट लिख डालो स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा हूँ। और लिखना के वो इसका ही स्टेटमेंट इसको वापस देना है टेक्स्ट बुक वाले को। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट को निकाल दो। द हाइट ऑफ टावर इज 15 root 3 मीटर। थोड़ा बहुत इंग्लिश, वो तो गुजराती मीडियम वाले भी इतना सिंपल इंग्लिश तो लिख सकते हैं। तो स्नैप बनाने के लिए मुझे तो कोई रीजन लगता नहीं। अभी नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ये थोड़ा पहले ठीक से रीड कर लो। इसका मैंने एवरी टाइम बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट किया तो लिखना है, तो लिख लो मेरी होमवर्क। Electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर इसको वो रिपेयर करना है। मतलब मान लो कि ये भी है वो पूरा पोल है, इसको यहाँ पर रिपेयर करना है। मान लो कि आप खुद यहाँ रिपेयरिंग इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको लेटर यहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं है। लेटर यहाँ तक आए तो भी आप आराम से रिपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि खुद की हाइट तो कुछ होती ही नहीं, तो ही आप ठीक से कर सकते हो। यहाँ तक ले चल तो आप खुद कंफ्यूज होगे, बैठ के करना पड़ेगा। ओके, सो लेटर कैन अप टू दिस पॉइंट, देन आल्सो यू कैन रिपेयर द फॉल्ट एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली। ओके, तो इसने एक लेटर रखा है और वो लेटर की बात भी कर, लेकिन हमारे पास अभी पूरा पोल नहीं रहेगा। हमें वो बिलो लोअर पार्ट ही हमारा इंटरेस्ट की बात है, ये ऊपर वाला पार्ट तो काम का नहीं है। क्या देते हैं देखते हैं। हाँ, नाउ पोल इज ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर लिखना है तो पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन बिटवीन 5 लिखूं तो आप ऐसे समझेंगे या तो ये पार्ट 5 है या तो ये पार्ट 5। एक्चुअली पूरा 5 है, तो ऐसे मैं एरो करके लिखता हूँ। She need to reach point 1.3 meter below. So 1.3 meter below. She want to reach up to this height. Okay.
She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. Okay. What should be the length of the ladder that she would use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizon? Inclined 60 degree to the pole, to the horizon. Okay. Now I have to write it D. Okay. Now what happens? To the horizontal would enable her to reach the required position. Required position is यहाँ पर. Okay. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot? So they are asking two things. One is this length of ladder and how far lower end of the ladder from the base of pole. Okay. So now it is ladder. To reach a point below the point of what would be the length of the ladder? So this is ladder. This is all from pole. Okay. ऑब्वियसली दो चीजें चाहिए तो हमें दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. एक बार कुछ और लेंगे, दूसरी बार साइन फर्स्ट एक से दूसरा लेंगे. ओके. तो अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मेजरमेंट लिखना बाकी है. ओके. अबे ये हमें मिलेगा. ये मिलेगा कितना मिलेगा? 3.7 नहीं दिया है, लेकिन 5 में से ऊपर वाले पार्ट को सब पे कम करेंगे. बस कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल है साइड है ना. ओके. तो पहले तो वो लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले डिस्कस करो. सपोज करके सपोज ए बी टाउ, लेकिन हम एसी को सीबी इज व्हाट, और ये टॉप ऑफ टावर लिखो या ना लिखो, लिखते चलो ये टॉप ऑफ टावर. सीडी को लेटर बोल दो, दो पॉइंट क्लियरली आ जाए. तो सीडी लेटर, और यहां भी लिखना है तो लिखो सी इज टॉप पॉइंट और टॉप पार्ट या तो टॉप एंड ऑफ लेटर. तो देखो ये भी क्लियर. बस अभी क्या बाकी है कुछ. तो लिखो मेजरमेंट, लेकिन पहला मेजरमेंट हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है. देखो बीसी विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम AB माइनस AC. ऐसा करने से नहीं मिलता है. सो 5 माइनस 1.3 बीच में मीटर लिखने की जरूरत नहीं. लिखो तो अच्छा है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है. लास्ट लगा देना 3.7. ओके. सो दिस पार्ट गिवन, वी फाउंड दिस वन फ्रॉम removing upper part from total height. Now angle CD या तो BDC बोलो या CDB बोलो, बात तो एक ही है, 60 डिग्री. What to find? Two things to be found. CD question mark, AB question. Okay. So CD है ना, वो CD is nothing but a CD. Okay. और BD बेस है. क्यों वो BD भी क्वेश्चन मार्क किया है वो भी देख लो. ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस्ड द फुट ऑफ द लेटर. सो इसका पोल का फुट और लेटर का फुट, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बोलो मान लो. ओके. तो ऑब्वियसली हम दो बातें एक साथ करेंगे. पहले तो ट्रायंगल BCD. ओके. पहली बात तो मैं लोग मैं को लेटर की हाइट फाइंड करने के लिए 60 ले लूंगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड गिवन हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड. दूसरी बात मैं 10 ले लूंगा. पाइथागोरस नहीं करूंगा. आप सेट कर सकते हो, एक आंसर मिले तो बाद में पाइथागोरस कर सकते हो. So first I am taking 60 and then 10 by opposite and adjacent. Okay.
So I divided my space in two parts. So first of all, sin 60. What will be sin 60? AC upon CD. What is the value of sin 60? Root 3 by 2. Okay, AC we already found 3.7. Okay, and CD is not there. Actually, CD is there, but CD's measurement is not there. Okay, now root 3 CD equal to 3.7 into 2, 7 is a 40, 7.4. Okay, so it becomes 7.4. Okay, now they just converting into that one because root 3's value is given here. So now CD becomes 7.4 upon root 3. Root 3 की वैल्यू में सीधी रखूँ क्यों? क्योंकि एक्चुअली रूट 3 अपॉन में जाएगा, इसकी वैल्यू ये लोगों ने दे रखी है. ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता हूँ. पता है ना पॉइंट कैसे रिमूव करता है? यहाँ 740 होगा. हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम 2 डिजिट है. तो बस इसको आप करो ना डेसिमल में, तो वो आंसर मिल जाएगा. इसने किया हुआ ठीक ही होगा. 4.28 मीटर. देखो इसमें दी गई है वैल्यू, इसलिए हमने रखी है. इसमें वैल्यू दी है इसलिए हमने रखी है. अभी तक हमने कहीं पर नहीं रखी. सो फर्स्ट टाइम दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ रूट. अब याद रख के भी कहीं पर यूज नहीं करेंगे. जब तक वो लोग नहीं करके हम क्यों टाइम वेस्ट करें? इसमें टाइम काफी वेस्ट होगा डिवीजन. ओके, ये मैंने क्या किया वो तो आप समझ सकते हो. अभी 10th में शायद आपको. ओके, तो 100 से इंटू क्यू किया, पॉइंट 100 की 10 या 1000 की यहाँ मैक्सिमम 2 है या तो नो प्रॉब्लम. मैक्सिमम 2 है तो 2 के हिसाब से 100 से किया. तो ये फर्स्ट आंसर तो मिल गया. अभी हम बात करेंगे बीडी. सीडी की बात होगी, अभी बीडी की बात होगी. सिगरेट. तो देखो बीडी के लिए 10 लेना पड़ेगा. तो 1060 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एबी अपॉन बीडी. ओके, 1060 की वैल्यू आपको पता है रूट 3. एबी अगेन 3.7, बीडी नॉट गिवन. सो अगेन बीडी को यहाँ ले लो, रूट 3 को वहाँ ले लो. तो 3.7 मैं अगेन रूट 3 नहीं लिखता हूँ. सो रूट 3 की जगह क्या लिखता हूँ? 1.7. सो अगेन 370 अपॉन 170. वो भी अभी हम नहीं कर रहे. आप थोड़ा वेरीफाई कर लेना ना, कभी कभी इसकी भी मिस्टेक तो होती है. तो 2.14 मीटर. ओके, तो यहाँ थोड़ी बात नहीं थी, मतलब ऐसा तो आगे भी आ गया था. एक ही समय अगर 2 से 2 लोग पूछे तो हमें क्या करना है? लास्ट में मैंने कैलकुलेशन की है जो अभी आपको शायद नहीं दिखाई देगी. लो, okay, so now you can understand what is that. 1 meter. Okay. Okay, now again just look there, understand there, write down what text is. ओके, नाउ अभी एक सम बाकी है, वो भी थोड़ा कर देते हैं फर्स्ट. बाद में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाकी रहा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. यहाँ थोड़ा नई बात थी. ओके, अभी देखो एग्जांपल नंबर.
बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर की खुद की हाइट दे रखी है। ओके, तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो पहले तो वहां पर एक क्या दिया है, चिमनी। चिमनी मतलब टावर जैसी बात, तो इसको वो लोग बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम, ये स्टॉप। ओके, यहाँ जो ऑब्जर्वर खुद है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वर की हाइट दी है, तो हमें हाइट बतानी पड़ेगी। अभी तक हमने कहीं पर नहीं बताई, क्यों? क्योंकि मोस्टली हम इसको पॉइंट लेट समझते हैं, मतलब इसकी हाइट निग्लेक्ट करते हैं। यहाँ हमें कंसीडर करना पड़ेगा, व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दैट इज गिवन सीधी, आई जस्ट गिविंग सेम नेम। ओके, तो ये डी पर से ऑब्जर्व करेगा ना, क्योंकि मेरी आईज कहाँ है, ऑलमोस्ट एट अपर पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ माय बॉडी, तो डी यहाँ। तो मैं डी में से ऑब्जर्व करूं तो पहले तो वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन तो होनी चाहिए, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, और ये मिला लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये पूरा यहाँ से मिलेगा, ये पॉइंट को ये लोगों ने डी में दिया, क्योंकि सारे लाइन तो होना चाहिए। सो now so this chimney is divided into two parts, above part below. Now CD is 1.5 meter. यहाँ देखो, ये पर्सन भी वर्टिकल, चिमनी भी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन मिले तो बीच में क्या बनेगा? ऑब्वियसली रेक्टेंगल। आपके घर में टाइल्स फिट की हुई है तो टाइल्स फिट हो, इसमें जो एज होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल होती है, तो ऑब्वियसली आपकी टाइल्स या तो स्क्वायर होगी या रेक्टेंगल होगी, लेकिन स्क्वायर इज अ टाइप रेक्टेंगल, तो बनता क्या है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड इक्वल। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5। ओके, वो सारी बात अभी लिखेंगे। और क्या दिया है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स चिमनी। तो चिमनी से कितना अवे है? 28.5। तो ये 28.5 है, तो ये ऑब्वियसली। ओके, क्योंकि इन रेक्टेंगल, बाय रेक्टेंगल आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल्स फॉर्मिंग रेक्टेंगल ऑलवेज opposite sides are equal, that's why I have written here given, so here written, this given, this is also given. Now what they are asking? Total height. So this is only wall. Obviously, now you can find first of all A. After finding A, you just add 1.5, so that will be your final answer. Obviously, why? Simply total height चाहिए, तो इसमें ये height मिलानी पड़ेगी। अभी तो हम ट्रायंगल में काम करेंगे, रेक्टेंगल को भूल जाओ। हम काम करते कहां पर? ट्रायंगल के अंदर। ओके, वो तो हम बाद में 1.5 मिला देंगे, पूरा आएगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब, सपोज A B is chimney, E is top of chimney, CD is person, या तो observer, CD is observer। ओके, यहाँ टॉप ऑफ ऑब्जर्वर ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। डी ऑब्जर्वेशन आइज लिख सकते हैं, डी आइज। आपके लेयर के हिसाब से कोई मेमोराइज करने वाली बात नहीं, क्लियर करना है आपको। आप एक्सप्लेन भी इंग्लिश में करते हैं, कि कोई आप रिपोर्ट लिखते हैं या तो आपको ट्राई करने में पता है कुछ फिगर देख के आप इसको डिस्क्राइब करते हैं कि एक गार्डन है, गार्डन में दो चिल्ड्रन खेल रहे हैं, वहाँ एक होकर है, वहाँ एक क्या है, स्नेक लेडर है, स्टेप एंड लेडर्स है, और कुछ है, मेरी को राउंड है। सो जस्ट लाइक दैट यू जस्ट डिस्क्राइब दिस फिगर। ओके, नाउ ओके, इस सी क्या है, डी क्या है, वो थोड़ा लिखना पड़ेगा। ओके, डी इज हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम डी,
या तो ई क्या है वो देखो, ई हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम डी intersection point of horizontal line from B to A. AB को इंटरसेक्ट करेंगे, D में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, वो AB को जहां इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं E। तो ये नया पॉइंट है, पूरा भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, लिख सकते हैं। ओके, नाउ मेजरमेंट में एक तो देखो, पहले तो लिखो कि ये जो बन रहा है ना कौन सा BCD, वो कैसे भी नेम लिख सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में BC डायरेक्ट पेपर नहीं आना, BCD लिखो, ABCD लिखो, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज BBC लिखो, लेकिन सीक्वेंस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे ले जाओ। इस रेक्टेंगल क्यों रेक्टेंगल है वो भी क्लियर नहीं करेंगे, वरना तो क्या हम लिखने जाएंगे सम के अंदर दूसरा सम बनेगा कि व्हाई इट इज रेक्टेंगल। ये आपको अंडरस्टैंड, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, नाउ इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल BC इक्वल टू 28.5 मीटर। ओके, BC इक्वल टू B, दोनों साथ में लिखो 28.5, CB इक्वल टू B, CE इक्वल टू B 1.5। ओके, एंड एंगल ये दिया गया है, कितना है देखो, 45 एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ADE इक्वल टू 45। थोड़ा नया नहीं बात है, थोड़ी ये बात नहीं, क्योंकि पर्सन की हाइट पहली बार हमें मिली है। ओके, so just understand so far what I have written. It is very simple. And here that is a rectangle, so opposite side both are equal. This again second tab again equal, and one angle is given. What is asked? So first of all A is asked, and then AB is asked. वो तो ऑटोमेटिक आएगा ना, ये आएगा तो ओके। तो एक बात हुई, बस अभी आपको कुछ नहीं करना है, 1045 करो तो ऑब्वियसली वो 45 में देखो ये दोनों एक को दिया है, तो ये भी 28.5 आएगा, इसमें ये मिला तो 30 टोटल हाइट मिलेगी। और लेके आप कर सकते हो, फिर भी मैं भी रब करने वाला हूँ। ओके, अगेन सेम प्रोसेस से आप पास हो, मैं रब करेंगे, रब करके वहाँ लिखूंगा फिर से कैलकुलेशन का स्टेप, क्योंकि अभी मेरे पास इनफ स्पेस नहीं। फिगर विल बी देयर। Okay, so I hope you either take screenshot, otherwise just pause video and return it. Okay. Now in triangle ADE, ये हमारा लास्ट मेन स्टेप, in triangle ADE. Okay. क्या होगा हमें 1045 इज इक्वल टू AE अपॉन B। अभी से वो सारा एग्जांपल भी फेसबुक में लिखना है, क्योंकि अभी तक हम शायद नहीं लिखते थे, कोई कोई में लिखते थे। अभी जो बाकी सिलेबस है इसमें सब कुछ है, एक्स्ट्रा एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, सारे जो सिलेबस में वो एग्जांपल और सारे सम फ्रॉम एक्सरसाइज। 1 equal to AE upon 28.5. So obviously 28.5 equal to A. थोड़ा सा करके फिर से लिख दो, AE equal to 28.5 मीटर। लेकिन ये हमारा कोई आंसर नहीं, क्योंकि now A is nothing, ये भी हो पूरी चीज नहीं है, तो इसके लिए मिला दो AE equal to
ए ई प्लस बी, मतलब ए हमें मिला है 28.5 प्लस 1.5 पहले से था, क्यों था वो मैंने समझाया था, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड 30 मीटर। अभी लिखो स्नेक, हाइड्रोजन में इज 30 मीटर। ओके, सम थोड़ा लंबा है, थोड़ा डिफरेंट भी है, तो ऐसे सम को आप अलग से ट्रीट कर सकते हो। मैंने आगे भी बोला था, थोड़ा स्टार में या अलग एस्टेरिक में रख दो, आपको पता हो जाए कि इसको थोड़ा फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने की जरूरत है या तो ज्यादा समझने की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, so far we solve all the sum which we have to solve. Now remaining are objective questions from worksheet we will discuss in next lecture. Today's our lecture becomes long. Okay, होमवर्क में अलग से दे दूंगा आपको। बस आज हम यहाँ ही रुकते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ।